satisfied with. This order that you've read is 17th of January. That's right. And we were expecting something to come, some application and something. Despite that, we had made it clear that personal criticism of judgments is no issue, but we would want to attend to it in a serious manner. I mean, not somebody comes and throws one paper, somebody comes and says something. I mean, I don't know, sort of, I was duped into signing this petition. I don't know what's all these statements being made. I mean, if you file something, if you want to withdraw it, there's a procedure, you file something else. So, Shahzad Saukar Sahab, aap zara bataएं, because we consider this matter serious, but we cannot pass order till it goes through the committee first. That was the understanding yesterday, that they will file a separate application. No, we were expecting it. I mean, if someone doesn't want to, we can't force someone to do so. साहब से कहा भी था कि कुछ चीजें रिकॉर्ड पे, कुछ सीएमए कोई चीज आप फाइल कोई कह रहा है जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, जीआईटी बन गई है। भाई हमें शक्ल तो दिखा देना कोई कागज के टुकड़े की। जीआईटी बन गया, यू शुड नो। आई मीन नहीं, हम नहीं चीजें देखते हैं भाई, हम जो हमारे सामने आता है, ये पहले चीजें होती गई थी, हमें एतराफ करने में कोई बात नहीं, मगर उस वक्त तक इन चीजों का तरीकेकार नहीं तयन हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, चीफ जस्टिस ले सकते हैं, कौन ले सकता है। अब तो कानून ने तयन कर दिया है ना, और वो कानून हमने कहा सही है। अब ठीक है, बात अहम बात है, हम ले लें, हमें बता दीजिए, कमेटी के पास चला जाएगा, आ जाएगा। मगर अगर सीरियसली इसको लेना चाह रहे हैं, अगर एक कोई कागज उधर से दे रहा है, उधर से दे रहा है, हम आगे बढ़े कैसे? हम आई डोंट नो कैसे बढ़े। हम सुमोटो लेंगे, फिर आप ही हम पे इतराज करेंगे कि जी आप ही अपना जो कानून आपने अपहोल्ड किया उसी को आप वायलेट कर रहे हो। तो ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल। अब जरा हम कानून पे चलना चाहते हैं। जीआईटी का कोई नोटिफिकेशन भी इशू हुआ होगा, अभी हमें क्या पता, हमें कोई किधर से पता होगा? वो कल को अटॉर्नी जनरल हम पे इतराज कर देंगे, जी आपको क्या पता। टुकड़ा तो लिया है सामने। जीआईटी का नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि इन विच लॉ द जीआईटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सवाल से सवाल उठेंगे भाई, अब एटीसी के लॉ में तो है। आपको याद है भाई जी, मुझ पे बड़ा भाई, हम केस जो हमारे सामने, हम उस पे तो हमने ऑर्डर कर दिए, हमने डायरेक्शन भी दे दिए, बाकी चीजों की चलें की बात का नोट भी कर लिया। अटॉर्नी जनरल गिवन अंडरटेकिंग, वो तो उनके हद तक है, मगर अब हुक्म हम कैसे करें इस बात पे, मजीद कैसे चलाएं? या तो हम खुद इसको क्या करें? सुमोटो भी हमारे पास अख्तियार अब नहीं है। उसका नोटिफिकेशन और जो नोटिसेस इशू हैं, कोई मॉडल सैंपल नोटिस किसी एक का भी होता है, तो वो उससे आपको पता चलता है कि इन विच लॉ द जीआईटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट एक्चुअली दे आर गोइंग टू इंक्वायर फ्रॉम द जर्नलिस्ट। जी हमें आपकी ताउन की जरूरत है ना, बिकॉज हम तो, मैं तो जनाब क्या, हाउ डू वी, हम कंसर्न्ड है, मगर कोई तरीकाकार तो अपना लेना। The only way forward is that either they move a proper application attaching those notifications and notices so that पर ये जो प्रेसिडेंट साहब आपके ना, ये जैसे भी कह रहे थे कि हमें लिस्ट नहीं मिली, बात ये कि वो तो लिस्ट दें ना दें, आपको अपने पास तो पता है ना आपके मेंबरान कितने, उनको वो नोटिसेस इशू हैं, तो वो मेंबरान से तो वैसे भी नाम खुद पता कर सकते हैं। देयर इज नो नीड के उसमें जरूरी किसी को तो आई होगी ना। जी भाई, यही पाकिस्तान में किसी को आया ही नहीं नोटिस, फिर मतलब वो नोटिस ही फेक है। रात तक आई वाज अंडर द इंप्रेशन दैट सच एन एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड एंड अ कॉपी देयरऑफ। देखिए, ये जो आपको अभी चीफ जस्टिस साहब ने इसका एक्ट का जिक्र किया ना, अब ये अपीलेबल ऑर्डर हो गए सारे। ऐसी है, तो अब हम यहाँ पे बैठ के कुछ करें, उसकी भी अपील होगी। अब इंट्रा कोर्ट अपील का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी, अब आपको पता है ना, वो रिवाइव हो गया। It has to go to the committee first. That is the first thing that happens here. नहीं, कल we heard it a lot. आज हमने adjourn किया, भाई हमने कोई तारीख नहीं दे दी, कोई महीने बर्बाद की। We can't tell somebody to do something. We can only kind of it's obvious and say it. So I don't know how to proceed further in the matter, because undertaking is there of the Attorney General. You are standing by your undertaking. कोई गया है कोई वहाँ पे FIA के सामने? Sir, नहीं, कल I had asked the GIT to not to press with the notices yesterday because most of them were here and the court proceedings were underway. So they were adjourned till today, sir. They intend to file it today. We'll So give the latitude. once the application is before
देखें वो कल था, उन्होंने कहा तो वो एडजेंट हो गया आज के लिए। अगर तो आप कोई चीज फाइल करते हैं तो टिल सच टाइम आप उनको रोक देंगे, वो ना कोई भी फिलहाल करे मीटिंग। आप अपने अंडरस्टैंडिंग क्यों? We just used our good offices. We even said कि have a meeting. You know, but we can't pass an order, a direction. There's a big difference. Attorney General may do it, he may not do it. So we can only request him. There's a very different thing. We can direct him, and a request is a very different thing. 3-4 दिन 2-3 दिन में आप फाइल कर दीजिए। I don't know how we proceed with what matter. सर सीएमए तैयार कर ली गई थी, सिर्फ लिस्ट की अवेटेड थी, हमें कल दी जानी थी, नहीं दी गई, फिर हमने सुबह तक इंतजार किया, नहीं दी गई। अभी सर अगर आप हमें 10 मिनट भी दे देंगे। सुन लीजिए, वो क्या मैं नहीं देता आपको लिस्ट की जरूरत नहीं, आप अपने नाम टाइप कर किसी एक को तो नोटिस आया होगा ना पाकिस्तान में, वो नोटिस हमारे पास है सर, सीएमए भी तैयार है, सिर्फ 10 मिनट दे दें। उनकी लिस्ट आप खुद टाइप कर दीजिए ना कि इतने साथियों को आइए, वो ना दे लिस्ट आपको तो वो कोई सर्टिफाइड कॉपी वो आपको फैसिलिटेट करेंगे तो नहीं, इस मामले में नहीं है ना वो। सर अगर 10 मिनट की कोर्ट या तो इसमें हेयरिंग में वक्फा कर ले, हम फाइल कर देंगे क्योंकि सब कुछ तैयार है। करें, हम आपको मना नहीं करेंगे, मगर हम इशू सर सिर्फ काफी में नहीं होगी, वो पिटीशन होगी। Petition will have to be brought. सारे ऑर्डर अब अपील Petition will have to be brought under 184. Matter will have to go to the committee, and then the committee has to then. आपको उसको टाइटल चेंज कर दो। अभी ये मैटर था पेंडिंग, तो इसमें कम से कम कुछ प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर दो चीजें हैं, अगर सीएमए होगी तो वो जाहिर बात है सिर्फ नोटिस की आता है, पटिशन होगी, पटिशन तो फिर माशाल्लाह आप लोग तो हमसे ज्यादा कानून आजकल जानते हैं, ठीक है, तो आप ही कर लें, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि वकील से थोड़ा मशवरा कर लो। आई एम श्योर शहजाद शौकत साहब से बात करेंगे, वो आपसे कोई फीस नहीं तलब करेंगे। सारे ऑर्डर अपीलेबल हो गए, अब ये इंट्रा कोर्ट अपील में अब हम अपने ही कानून को वायलेट करने चल पड़े तो आप ही लोग हम पे तनकीद शुरू कर देंगे। हमें तनकीद से इतराज नहीं है, मगर कानून की वायलेशन से बिल्कुल इतराज है। तो actually I was expecting some applications, no application is coming forward. My lord, with your permission. आप भी आ गए। I don't know. सर मेरी रिक्वेस्ट ये, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो कोई जल्दी नहीं है। आई डोंट नो क्यों हमारे इदारे इतनी जल्दी में है कि ये कानून आपस में बात करें ना, आपके इदारे आपकी बस सर सिर्फ 7 डेज का, अगर हमें इलेक्शन के बाद तक के मैटर पेंड कर दें ये पूरा प्रोसेस। आई थिंक ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन के बाद तकरीर ना करें प्लीज सर। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दे दीजिए, ठीक है सर, ठीक है। हम ये हम फोरम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आकर के कल का अखबार में खबर लग जाए। आप लिख कर दे दीजिए तो हम इनसे पूछ भी सकते हैं, जिससे पूछना उससे पूछ लेंगे। सिस्टम तो हम बनाए ना, सही तरह से सिस्टम बने। थैंक यू सर। अगर आप इनको परसुएट करें सदर साहब को, वो हमें कोई जल्दी हम समझे तो वो कयूम सिद्दीकी साहब का वाला केस और वो हैदर साहब का, वही हैदर, अच्छा आए हुए आप आपको टाइम मिल रहा है ना, 184 में कन्वर्ट कर दो इसको। अगर वो फाइल भी होगा तो हमें कमेटी के पास जाती है। हम भी तो हम चाह रहे थे सिर्फ नोटिस की हद तक अगर वो कर रहे हैं ना, वो तो अभी उन्होंने रोक दिया ना मामले को। सर आज भी बुलाया गया। अच्छा अब ये हमें एक तरफ से बता दें, कानून पे अमल करेंगे ना, सिर्फ ये बता दें। सर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम कब कह रहे हैं सर इलेक्शन इज अ क्रूशियल मोमेंट, मीडिया को सारे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है सर। फिर आप सिर्फ 7 दिन की बात वही साहब, आप यू आर हियर, इट्स गुड, सो वी कैन टेक अप योर पिटिशन एंड द अदर 2 petitions and we can, I don't know, whenever they file it will immediately go to the committee. The committee generally meets on a Thursday unless there is some reason why judges are not available. So because these 3 judges are not the committee. Committees are different. The 3 senior judges are the committee. My lord, my petition actually just merely seeks a balancing of the constitutional rights. It talks about how there is already a Supreme Court. No, what do you want us to do? That's, I mean, I've read your petition. It's very good, but what sort of order would you want us to pass? I've just, in especially these circumstances, the only thing that we are pressing is कि a code of conduct से Supreme Court का ordered ही approved एक code of conduct बना था for broadcast media. अब सर Article 19 जो है, it clearly covers content. It doesn't cover one medium to the exclusion of other mediums. It talks about speech overall. But what we have right now is that broadcast media is regulated completely differently. So whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. अब मैं ये नहीं कह रहा
कि जो ब्रॉडकास्ट मीडिया पे आप नहीं कह सकते. What do you want us to do? The code of like it happened last time, perhaps a direction can be given कि stakeholders बैठ जाएं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और code of conduct जो ऑलरेडी बना हुआ है, और एक सर कानून भी बनाया था उन्होंने, एक यूनिट. Which law the code of conduct will be made? जी सर, code of Can the Supreme Court pass such an order? सर पहले भी कैसे ये नहीं, आपका ऑर्डर ये नहीं होगा कि लेजिस्लेट मदद कीजिए ना. पेंड्रा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो मेरे ख्याल चैलेंज हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा ठीक है इसको मिलके, इसका तो कोड ऑफ कंडक्ट पेम्ब्रा का 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत बना हुआ है सर. बट सर तो पुरानी चीज है, उसके अंदर इतराजात हुए थे मीडिया को, उस पर वो सिर्फ चैलेंज चल रहा था कि हुआ क्या, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है. उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिल बैठ के आप कोई कर ले, तो वो एक सेल्फ इम्पोज जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वो बनाए गए. आई एम सीकिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड. ऑल आई एम रियली सेइंग इज कि सर उस वक्त अगर इक्वली रेगुलेशन होती, या आई वोंट इवन कॉल इट रेगुलेशन बिकॉज़ इट्स आल्सो प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच. रियली इट इज protection of speech. Sir, I'm asking you a different question. You are arguing your case. Sir, Once again. Sir, I am saying that such a direction can be given because it's enforcement of constitutional rights. What order should be passed? Just a simple question. You are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to enforce Article 19. Fine. Wishes. If wishes can be, what do they say? Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. Never, you should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce constitutional rights. Like we can request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. Sir, अगर ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार हो. No, देखिए, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules. There is no law है. एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं. जी सर. सर बात ये enforcement of constitutional right के लिए सर पेम्ब्रा है, उसको उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना. If there is some law that should be regulated or should regulate the सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है. डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना. उसमें उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना. आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब, ये तो बताइए आप. My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है. या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them. And that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज पब्लिकेशन का मतलब इंटरनेट भी है उसके. सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की. पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, so there is that removal and blocking of unlawful online content, procedure, oversight and safeguard rules of 2020. अच्छा, ये पेज 15 है पिटिशन की. This is now constitutional petition 27 of 2022. नहीं, वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं? सर ये है removal and blocking. आपकी जो फर्स्ट प्रेयर है ना, My lord, directs the federal government to prepare and implement specific code of conduct. Tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. my lord. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Yes. Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law or in the Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do we do? My lord, we issue them a contempt notice on what basis? On a wish. My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions but inherently regulation is required. आप थोड़ा हाँ sorry so article sir अभी तो sir आप जिस तरह आपने बात की, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this
not in this case. एक सेकेंड मती साहब, ये बात कर रहे ना, थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना। हैदर वहीद साहब, देखिए अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटीशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। मैं कह रहा था, वो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटीशन देखिए पेंडिंग है 2022 से। जी सर। ठीक है, हम 24 में आ गए जी। जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको मना कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अदालत क्या कर सकती है, आपकी मदद चलें, ये भी कर लें, मदद भी करना चाहते हैं, हम करें कैसे? ये बताएं हम किस किस्म का ऑर्डर पास करें? My lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the cognizance... बताएं ना आपने, अच्छा, enforcement of which provision of Article 19? ये भी आप देखें, ऐसे गोल ऐसे ना कर दें ना। Article 19 में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ रीड Article 19, my lord। ये आपने लगाई है कॉपी? आपको एक मिनट से मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इन द मीनवाइल मैं पढ़ लूँ। ये रिमूवर एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2021। My lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. इसे किताब में पैमरा लॉज के just provide. आप बता दें क्या कौन सी आर्टिकल 19 में एक पार्ट है जो कि इजाजत देता है, दूसरा पार्ट है जिसमें ममानियत है। आप ममानियत कर रहे हैं या इजाजत वाली बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ आर्टिकल कह नहीं, कानून क्या कह रहा है? My lord, कानून ये कहता है, पढ़ लीजिए प्लीज। जी सर, मैं आर्टिकल, आजकल फैशन हो गया बगैर पढ़े चीजें आर्ग्यू करो। भाई देखिए, आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है सबको इजाजत है, फिर उसके बाद वो जाके रुकावट डाल देता है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल। I'll read आर्टिकल 19। हाँ, तो अब हमें आप कह रहे हैं आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें, तो कौन सा पहलू? दोनों पहलू करें, एक पहलू आप पढ़ देते ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी of Islam or the integrity, security or the defense. एक सेकेंड, तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, पहला रुकावट। दूसरा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस। चलिए इसको एक ही हम तस्वुर कर लेते हैं। दो और एनी पार्ट thereof, friendly relations। ये हो गया तीसरा रुकावट आ गई, तीसरी रुकावट आ गई। पब्लिक ऑर्डर, ये चौथी रुकावट आ गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी और मोरालिटी, इसको पांचवी रुकावट कर लें। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, छठी रुकावट ऑफ और incitement to an offense। तो 7 रुकावटें आ गई। आईन ने बनाई है, जरा ये हम वजाहत करते चलें, हमने नहीं बनाई है। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब कह रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19, तो अब आप बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात कर रहे हैं, जो 2 राइट्स दी गई हैं, फिर इसमें ये आ गए रिस्ट्रिक्शंस। तो आप ये सिर्फ ये बात करना कि आर्टिकल 19 की इन्फोर्समेंट से मुराद आपकी क्या है? My lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media but not to digital media. We agree. What do we do? आप तो ये चाहते हैं कि इसको रेगुलेट कर लेना। यू वांट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो यूट्यूब है, इसको रेगुलेट किया जाए, ये आप कह रहे हैं ना? इसको मैं कह रहा हूँ जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड है, उसको जो है डायरेक्ट किया जाए, स्टेकहोल्डर्स बैठ के वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आपने जो बात कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव, चलिए कानून की बातें कर लेते हैं ना। नहीं, वो कानून आप सिर्फ ये बताइए, माशाल्लाह you're a senior constitutional lawyer. Now, what do we do? We agree with you. Let's even go that far. How do we do it? After all, everything must be done in a particular way. Yes, my lord, to enforce constitutional rights of Article 19 and 25, and in keeping with balancing of constitutional rights, a direction can be given to the federal government. It is, after all, an executive. You're not asking for legislature to make law. A direction can be given to the federal government that made the first code in any case. It was the federal government. 1 second, please argue this case. I don't know what that case is or what the first case is. Please argue this case. Okay, let's go step by step. Okay, let's assume this direction is given. Second assumption is, let's assume federal government does what? It sits with stakeholders and makes a code of conduct. Who? It can be journalists, lawyers. They can decide. Please देखिए ना, don't just say. आपका डायरेक्शन तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को। ये देखिए ना, ये स्टेक होल्डर्स वो अपने 4 दोस्तों को बिठा लेंगे अपने साथ। हाँ जी, ये स्टेक होल्डर्स हैं। अब आप ये ऐसी बातें जब आप करें, कोई चीज लाए अदालत, तो सोच समझ के करें ना कि ये अब बता दीजिए वो क्या हम करें आगे। पार्लियामेंट हैज टू मेक द लॉ। अब तो फिर वो पार्लियामेंट कलम पे कह रही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियार इस्तेमाल कर लिए, ये हमारा काम है। तो ये दरख्वास्त आप अगर सारे मेंबरान पार्लियामेंट को भी आने वाली है, उनको भेज दीजिए, शायद वो बना दें आपके लिए कानून, हमें नहीं पता। सर मैं लेजिस्लेचर के लिए डायरेक्शन नहीं मांग रहा, मैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि वो कोर्ट उन्होंने पहले भी
ब्रॉडकास्ट का बना है, डिजिटल का भी बना दे। के लिए कोई सपोर्ट ऑफ लॉ तो चाहिए ना। अगर अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही तो नहीं है, अगर उन्होंने कह दी हम नहीं करते या हम आइन के ताबे हैं और हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है। सर पीटीआई एक्ट और पीका में बन सकते हैं, ये अंडर रूल्स बनाने की जहां पावर है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी जर्नलिस्ट को जो है जिस तरह से गैग कर रही है। एक सेकंड आपको सुनेंगे ना जरा इनकी बात। नहीं आप लोग तशरीफ रखें 2 मिनट, हम जरा कयूम साहब जरा आप दोनों तशरीफ रखें, एक एक को सुनेंगे, आप कोई फिक्र ना करें, कोई नहीं जाएगा जिसको नहीं सुने। My lord, so my lord, there is statutory law under which this court can be made. Exactly. देखिए, you have hit the nail on the head. Yes. There is statutory law. So give us some statute to help you. Yes. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, sir, I would rely on the PTA Act. But it took a long time to come here. Sally. Gee, which provision? Read it. Yes. Provision. My lord, इसमें I will, however, submit, and this is. No, let's read. सर वो उस पे आ रहा हूँ सर। इट सीम आई एम जस्ट मेकिंग अ सबमिशन सर कि है उसके अंदर जी सर, आई एम जस्ट मेकिंग अ सबमिशन दैट एट दिस पॉइंट इन दिस एनवायरनमेंट इट सीम्स लाइक एवरीवन इज वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस एनवायरनमेंट। ये कोर्ट तो सर अगले 6 दिन में वैसे भी नहीं बनेगा। Forget it. The environment. We decide cases. We don't care about environment. मैं तो सर अपना You like our decision, you don't like it, fine. नहीं सर, मैं तो इस environment में आप नहीं देखिए, अब आप ये कह रहे हैं कि मैं environment को देखते हुए फैसले नहीं सर, मैं कह रहा हूँ मैं तो कंसेशनरी बात एज अ पिटिशनर कर रहा हूँ कि मैं तो इस चीज के लिए बताया, क्योंकि 6 दिन में तो कोर्ट वैसे भी नहीं बनेगा। अगर ये चाहें तो रख लें बाद में 8 तारीख के बाद, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बट नॉट नेसेसरली समथिंग। इनकार कब कर रहे हैं? जी सर, हम आपसे इनकार कब कर रहे हैं? हम सिर्फ कह रहे हैं हमें तरीकेकार बताइए। जी सर, हम अगर आपसे इनकार कर रहे होते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बात है। अभी तो हम आपसे कह रहे हैं चले मफरूजे के तौर पे हम आपसे अग्री कर रहे हैं। मैं इसमें सर एक जो है वो सारे कवानीन जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं जिसके तहत कोर्ट बन सकता है टू इन्फोर्स दीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सर वो एक आपको रिटर्न सबमिट कर देता हूँ कि ताकि जो आप कर दें, आपको टाइम चाहिए। जी सर, वक्त चाहिए। जी सर, मैं सबमिट कर दूंगा सर। जी सर, इसको पिटीशन अच्छा है जनरल की अंडरटेकिंग अच्छा चलिए ठीक है। फिर अगर आपको वक्त चाहिए, अगर ये जरा ये हमारी रहनुमाई कीजिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वकील का काम होता है आईन और कानून के हवाले से रहनुमाई करे जज को। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, और मेरे ख्याल में मैं भी बहुत सारे ख्यालात रखता हूँ मगर ताबे हूँ आईन और कानून के। बिल्कुल ठीक है। आप कितना वक्त चाहिए आपको चीज करने में? सर आई थिंक 10 days 1 week ठीक है। एक दरख्वास्त आ रही कि इलेक्शन के बाद करने, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है सर, ऐसे ही मैं ये देखें, ये जल्दबाजी में ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। अब इतना अरसा गुजरा है, जहां तक वो स्पेसिफिक केसेस थे वो तो हमने उनको कह दिया हमें रिपोर्ट दीजिए। हम अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीजें वो फौरन कर देते हैं। अगर कोई एक देखें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जजमेंट वो कमिटी, अगर शायद हो सकता है इनकी भी दरखास्त आ जाए, फिर 184 की कमेटी में भी चला जाता है, फिर उसको भी लगा देते हैं। चलिए, अब आप बात कर रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब तशरीफ लाइए। थैंक यू माय लॉर्ड। मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की इशू है या पिटीशन है, इसको क्लब ना करें हमारे इस प्रेजेंट केस के साथ, बिकॉज देयर इज अ कोर्सिव एनवायरनमेंट, और इस कोर्सिव एनवायरनमेंट में किसी किस्म के एक सेकंड आपको एक बात रोक लूं। ये जो केसेस हैं 3 केसेस हमने कुछ क्लब नहीं किए, ये चले आ रहे हैं 7। ये कम से कम हमें ना कहें कि हमने क्लब किए, क्योंकि चले आ रहे हैं सर। अब इसको डीलिंक करना होगा। जी सर, अब कोई किसी की दरखास्त आएगी, हम देख लेंगे। इस मौके पे ये क्लब्ड हैं, काफी ऑर्डर्स भी पास हुए हैं। तो अब हम ये अच्छा ठीक है, अगर आपको दरखास्त देना आप दे दीजिए कि हम इसको कर लें। तो कम से कम अब क्यों क्लब हुए, मुझे सारे ऑर्डर पीछे पढ़ना होंगे कि वजह क्या थी। अच्छा, दूसरी बात भी आपको दूसरी बात भी कर दूं, कल आपने एक बात उठाई थी कोर्ट में, हमने फिर भी सुन लिया। आपने जिक्र किए थे एक सहाफी का केस, अरशद शरीफ। वो मैंने चेक किया, वो 5 मेंबर बेंच के पास चल रहा था। राइट। अब
क्यों चल रहा था 5 मेंबर बेंच के, क्या वो चेंज होकर 3 मेंबर बेंच के पास हो सकता है? अब वो इतना वक्त नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हुए 3 मेंबर तो चले ही गए ना। तो अच्छा, उसमें दूसरी बात यह है, उसमें मैंने देखा कि उनकी वालदा मोहतरमा और उनकी बेवा दोनों के वकील हैं। जिस केस में वकील अपीयर हो रहे हैं, आपका मुनासिब नहीं है उसमें आना। वो उनको कोई बात है, अर्जेंट एप्लीकेशन देना है, वो दे सकते हैं। यकीनन वो हमसे ज्यादा बेहतर कानून समझते हैं और वो अगर देना चाहें, अब फिर उसको देखना होगा कि वो अगर इसके साथ लगाएंगे तो 3 मेंबर बेंच है, अब हम कर भी सकते हैं या नहीं। तो ये इसमें काफी वक्त, मगर मैंने सरसरी तौर पे देखा 5 मेंबर बेंच। थैंक यू वेरी ये मच। बात तो आपकी हो गई। अब आखिरी बात बता दें या कोई और बात है? सर क्विकली ये कह रहा हूँ कि ये 7 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। ये सब मान रहे इस बात को। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के इसके बाद ठीक है, सही मुनासिब बात है के बाद सारा अगर इनकी हम सुन लें, इनको सदर साहब को सुन करके, और सदीकी साहब को इतराज नहीं अगर 7 दिन के बाद। जी सर, एक आखिरी रिक्वेस्ट है। ये मैंने एक मई 3, 2014 को मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शेल नॉट कोर्ट फॉर कोर्ट रिपोर्टर्स। दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर आप चाहें तो इसको देख। आप कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? मैंने ये 2014 में ये आर्टिकल लिखा था। सोच लीजिए आप फंस तो नहीं जाएंगे उसमें? सर मैंने 2014 का लिखा था, जाहिर बात है फंस तो नहीं जाएंगे सर। जजेस और जर्नलिस्ट हमेशा अच्छा, अगर आप सर माजी के फैसलों पे हम दोनों फंसते हैं, जो हम करते रहे माजी में। नहीं, देखिए आप शायद फंस जाए इसमें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था कि आपको इसका हवाला दूं, मगर नहीं सर, आपकी बात ठीक है। आई एम विलिंग टू फेस इट सर, नो प्रॉब्लम। अगर इसी को कर दें तो आई विल बी देयर टू फॉलो इट। ये देखिए, इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ये मेरा काम नहीं है इससे मैं एग्री करूं या ना करूं। जी सर। मगर अभी हमें ढांचा चाहिए कि यह है कानून की अदालत, कि हम ऐसा हुक्म कर सकते हैं या नहीं। राइट सर। फिर सवाल होगा कि कैसे करें। बस सर, इस कोर्सिव माहौल में ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर बात तो मेरे ख्याल में करना वैसे ही है कि किसी भी चीज पे अंगूठा लगवा लें आजकल सहाफियों से आप, क्योंकि इतने बड़े नोटिस जारी हुए हैं, तो अब तो हमारे नुमाइंदे किसी भी चीज पे अंगूठा लगा देंगे। तो मेरे ख्याल में इसको डीलिंग करना बड़ा जरूरी है सर। इस केस को अलग करने हम सुन लेंगे ना, शायद ये नाराज हो जाए हैदर वहीद साहब, उसमें आप पार्टी नहीं है, या तो आप पार्टी बनने की दरखास्त दें, क्योंकि अभी आप स्ट्रेंजर हैं टू द प्रोसीडिंग्स। सर मेरा नहीं, ये देखिए, ये हम आपको फिर भी सुन रहे हैं, मगर टेक्निकली स्पीकिंग हम आपको नहीं सुने। सर मैं अपने केस के वाले से एक रिक्वेस्ट कर लूं, अगर वो मेरा केस जो अलग से लगा हुआ है किडनैपिंग वाला, उसको इस केस का नंबर क्या है? सर एसएमसी वो सुमोटो नोटिस था सर, 2021 का है। ये नंबर आपको पता है? आई एम सॉरी सर, वो अब इतना पुराना हो गया है कि हमें भी नहीं याद, आपको भी नहीं याद। इंसान अपने केसेस के नंबर याद रखता है। तो बस आप ऐसा उसे अलग से सुने सर, उससे इससे आप अपने किसी साथी से पूछ लें या कंप्यूटर में चेक कर लें, नंबर हमें बता दीजिए। मुझे सिर्फ ये खदशा है कि इस केस में अगर हम समझ गए आपकी बात, हम समझ आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर ना हो जाए। यही बात है ना सर, मुझे ये खदशा है कि जिन लोगों पे इल्जाम है या हम लोग अपनी स्टेटमेंट में लगा रहे हैं, वही लोग हमें जेआईटी में बुला के ये FIA के नोटिस में अगर तफ्तीश करेंगे ना, तो फिर बड़ी कंट्रडिक्शन हो जाएगी, हम पे प्रेशर होगा कि वो केस विड्रॉ कर लें, इस केस में आप चेक करें। एक मिनट ठहरिए, साल याद है आपको? जी साल याद है? 2021 सर। किसी को नंबर पता है आपके साथी बिरादरी में? क्रिमिनल ओरिजिनल 48 of 2020 सर। क्रिमिनल ओरिजिनल कंटेम्प्ट नोटिस 48, ये तो कंटेम्प्ट नोटिस होगी। जी जी, उसके साथ ही सर क्लब नंबर बताइए। क्रिमिनल ओरिजिनल 48 of 2020, ये कंटेम्प्ट 48 of 2020 सर, उसके साथ एक क्लब हुआ था। अच्छा, अब ठीक है, बस समझ गया आपकी बात, बस समझ गए। अच्छा, ये एक बात जो, अच्छा आप कुछ फरमा रहे थे? हाँ, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इनसे पहले आप प्रेसिडेंट साहब, जो प्रेसिडेंट आप हैं। जी सर, हमारी तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि कोर्ट ने कल ऑब्जर्वेशंस भी दी थी नोटिस की हद तक, लेकिन नोटिस अभी तक विड्रॉ नहीं हुए। आज भी काफी सारे दोस्तों को बुलाया गया। अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जनाब उसके लिए CMA फाइल होनी चाहिए थी। CMA फाइल आप ये हमारी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं है। नहीं, कोर्ट ने आपको नाराजगी की है। कोई पिटीशन आपको फाइल करनी चाहिए ना, ये 184 आपसे बार बार कह रहे हैं कि अपीलेबल बन गई है। पिटीशन तो ब्रॉडर उसमें आ जाएगी ना, तो वो कर देना आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन 2 दिन में कर दें। अभी हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो कल आप नोटिस जारी हुए हैं, जिनके ऊपर प्रेशर है कि जनाब फौरी तौर पर आए, जिन दोस्तों ने अपनी बीट्स कवर करनी थी, किसी ने अडयाला जेल जाना था। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। हमने अगर ऑर्डर पास किया
तो हम ये बता दीजिए हम इस तनकीद से कैसे बचेंगे कि हमने कानून की खिलाफवर्जी कर दी? बता देना, हम कर देते हैं ना। जैसे इनसे हम पूछे थे हैदर वहीद साहब से कि भी अब एक सेक्शन 3 हमने आपको भी पढ़ के सुनाया है, उस कमेटी के पास जाता है। अगर हमने ऑर्डर कर दिया तो आप ही लोग सबसे पहले तनकीद करेंगे कि आपने आइन और कानून पे का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठाया और खुद ही कानून तोड़ रहे हैं, जो कि खुद फुल कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उसको सराहा। सर अभी मुझे समझ नहीं आता, मुझे अगर इसका जवाब दे दें तो मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ। सर मैं इसी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो अगर खुद कर लेते बहुत आसान है, एक पिटीशन फाइल कर दो। सर वो बिल्कुल है। नहीं आप देखिए, बात सुनिए साहब, आप पिटीशन फाइल करें और वो जो कल इन्होंने अंडरटेक किया था अटॉर्नी जनरल ने, उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना? सर मेरी एक रिक्वेस्ट बात तो सुन लें पहले प्लीज। एक वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं भैया, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं अब, जब तक इलेक्शन तक का टाइम है सके हमने अंडरटेकिंग दी, उनको बोले भी रोक दे उसको, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद फिर यही रिक्वेस्ट है। वो ऑर्डर में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम समझते हैं क्या चीजें हम कर रहे हैं। चलें, आप क्या कहना चाह रहे थे कईम साहब? ये सर सवाल तो एक ही है कि क्या सहाफियों पे कानून लागू होता है या नहीं होता है? क्या जर्नलिस्ट पे कोई कानून लागू होता है या नहीं होता है? ये भी जर्नलिस्ट पे बहुत कानून लागू होते हैं। तो हम भी सिटीजन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, बिल्कुल। इसीलिए जहां आपकी पिटीशन पे तो हमने फौरन ऑर्डर कर दिए। जी अब जो दूसरे मसले आ रहे हैं वो हमारे सामने अगर कोई ले आए ना फॉर्मल तरीके से तो अच्छी बात होगी। हमने तो इनफॉर्मली इनसे बात करके अंडरटेकिंग भी दिलवा दी। तो अब आप अपना केस में कोई बात और करना चाहते हैं तो बताइए। जी इसमें क्योंकि अभी ये मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से कर रहे थे बात, और सारी चीजें वो जब आएंगे तो उस पे एक बहुत ज्यादा हमारे साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ क्या होता रहा, वो एक टेस्ट केस है। अदालत जरा उसके भी फैक्ट्स देख ले कि किस तरह से जर्नलिस्टों को जो कुछ हुआ जी वो हम देख रहे हैं ना। अब आप कुछ और मशवरा दे दें कि ये ऑर्डर पास कर दें आपके केस में, वो हम कर सकते हैं। नहीं वो तो जाहिर है अभी चीजें सामने आएंगी तो फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल उनको 2 हफ्ते उन्होंने वो 2 हफ्ते में आते हैं तो 2 हफ्ते में देखें क्या कहते हैं फिर। बिल्कुल, मगर उसमें कोई और पहलू रह गया। एक बात निशानदेही की कि अबसार आलम साहब का नाम रह गया था, वो बस हम ऐड कर देते हैं। और कोई बात है तो बता दीजिए। बाकी सब जो चीजें सामने आएंगी, कुछ चीजें थी जो आपके गोशे गुजार करनी थी। जब हम दूसरों को कहते हैं ना कानून पे अमल करो, नहीं बिल्कुल ठीक तो अदालत तो सबसे ज्यादा करना चाहिए ना। तो इसलिए आप शायद समझें कि वो हम फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मगर अब हम भी कानूनी किताबें हैं। नहीं कानून गलत है, डेफिनेटली कोर्ट हवा में तो कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, जाहिर है चीजें आएंगी। तो कम से कम जो है वो इतना जोर कर दिया जाए कि जो नोटिसेस हैं जो इलेक्शन के बाद तक जरा उसको जरा देखिए, बहुत से लोगों को बहुत सी नोटिस आई हैं और उन लोगों ने तो कोई इतराज नहीं किया जाने के लिए किसी इदारे में। बिल्कुल, अब शायद आप बात समझ गए हो, शायद ना समझे हो। तो जब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी आपको, फिर आपको मसला क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो अंडरटेकिंग करवाई उनसे, हमने देखिए हमने मोहतात तरीके से ऑर्डर नहीं किया था, हम समझते थे हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। बहरहाल कोई भी हम पे तनकीद करे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फिर हमने आइन और कानून पे चलेंगे। अब इनको दोबारा कह देते हैं यू स्टैंड बाय योर अंडरटेकिंग। कब तक की आपकी अंडरटेकिंग ये ओपन एंडेड अंडरटेकिंग है। आवाज एक बुलंद, आप थोड़ा सा ऐलान कर दीजिए अपनी अंडरटेकिंग का ताकि सब सुन लें। My lord, undertaking as recorded in paragraph 3 of yesterday's order stands. सर वो अंडरटेकिंग सर दूसरी हद तक है। वो अंडरटेकिंग ये है कि किसी की क्रिटिसिज्म के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हम ये चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं ना बहुत सारी चीजें। सर रिक्वेस्ट है सर, नहीं रिक्वेस्ट नहीं करें ना, आप मुझे कानून का हवाला दे देना सर। अब देखिए आप के साथी आपके साथ खड़े हैं सर, वो एक साथी हट गए उनसे कि वो ब्रांच भी फाइल नहीं हुआ, वो प्रोसीजरल मैटर है। नहीं सर वो अच्छा वो इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं तो इससे दूर ही हो जाता हूँ क्योंकि प्रोसीजर कंप्लाई नहीं हुआ। अब हम आपसे अब आप कह रहे हैं कि कानून को ना आप अप्लाई करें। सर मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। आप पता नहीं क्यों नहीं आप अपना व्हाई डोंट यू हेल्प योरसेल्फ। सर शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मैं समझ गया हूँ, आप सिर्फ बता दें कौन से कानून के तहत हम कर रहे हैं बस। सर अटॉर्नी जनरल साहब ने कल के नोटिस जो थे हमें कहा गया कि हमने विड्रॉ कर लिए, दोबारा जारी करेंगे। मुझे नहीं पता,
मेरे सामने नहीं हुआ ये, मेरे सामने ये बात बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं, दोबारा जारी करेंगे। नोटिसेज है, उसका एक प्रोसेस है। सो अगर वो विड्रॉ करना चाहे सर विड्रॉल के मतलब है कल की डेट। अरे हाँ ना, वो कल की डेट, तारीख जो थी वो गुजर गई, तो नई डेट आपको देंगे ना। यही बात हम कह रहे हैं सर, जितने नोटिस अब तक जारी किए गए हैं वो तमाम नोटिस इलेक्शन के बाद बुला लें साहब, बस इतनी रिक्वेस्ट है। If I may, my तमाम lord. लोगों को इलेक्शन के बाद बात तो करने दीजिए। Yesterday- Attorney General has right of audience in the courts of Pakistan before every lawyer even. Ji. My lord, yesterday I had given this undertaking, which is duly recorded in your order. And it continues. Yes, it continues. It is not time related. Yesterday, it was erroneously reported in national media. I also can't- found out देखिए, that the notices have been withdrawn. Notices can't just be withdrawn. वो There आप is a जो मर्जी process. करें, हमें नहीं पता। So वो नहीं डेट होता में भी है। चेंज फॉर द न्यू डेट, वो Yes, मीटिंग जो भी yes, होगी। yes. So the undertaking. देखिए, I have been repeatedly requesting the media. At least I don't sit on orders, issue them after months. We issued the order yesterday. I mean, late hours we sign it. Even we would try to take some time कि कोई typos वगैरह ना हो. But we issue it for this very reason. Please read the order. If somebody doesn't even bother, I mean, you know, the standard of everybody likes to be more holier than thou. If journalists don't bother to go on the website, and it was uploaded on the website at pretty early in the day, and the following day the newspaper still misrecords it, we can't help it. Because so much happens when you're talking. I mean, you are saying something, he's something, someone may think this is the order of the court. We may ask a question, doesn't become the order of the court till we dictate the order of the court. So I keep requesting the journalists, please read the order. You can criticize us that there was no order uploaded, so we understood this. But that is not applicable when, I don't know, I try to dictate all orders in court and we try to sign out the orders, uplink them where we are important orders which have people are interested in. Not every order gets uploaded for obvious reasons. So इतना अगर कोई ज़हमत नहीं करे, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने काम ही नहीं करना है, तो अब क्या करें हम? अब I can't force someone to do it. शहजाद साहब, ये जरा हमें थोड़ा सा आप भी हमें गाइड कर दीजिए इस बात पे. What are your views on this since we have requested you? As expressed yesterday, the Supreme Court Bar Association has always maintained that criticism on judgment and a fair comment on the judgment is welcome, because that actually helps us, all of us, improve. But if we come out with stories which are absolutely out of the blues and have no merit in them, then obviously that has to be checked. And particularly the new medium that we have, that vlogs and that YouTubers, I don't know what to do with them, but they are actually saying anything that they want to say, and that cannot be permitted. But that has to be somehow checked, and especially if we come out with fantastic stories about our honorable judges, that is not tolerable, and that is what we maintain. That is what we will always maintain. Criticism is welcome. They can always criticize the judgment, but beyond that, it is uncharted territory. They cannot be allowed to go there. One thing which nobody has addressed, maybe is the truth. It's when you talk about the freedom of the press, does it mean it can print lies? I don't know. I'm just posing these questions. मैं से इसका एक सेकंड करीम साहब, आप जरा बात करने देना जी. तो one aspect has not been addressed at all, and I've been advocating. I mean, I keep saying truth will set us free. It's a fundamental pillar of not just Muslim faith, but virtually of every faith in the world. The truth of what we do in courts, we strive towards the truth. What lawyers help us strive towards the truth. What a good journalist does,
help us go to the truth or when it is missing. So truth has gone out from the equation altogether. I don't know, because there are 7 restrictions. I would rather not go into the restrictions part, but at least we should stick on the truth part of it. That was what my Lord's judgment order of 20th of August, which was... This is a matter which orders are very difficult to pass orders on. But it actually points out towards that. Your Lordship referred to Article 227 in the order of the 20th of August. It is reported in 2021. 1602, I believe. 2021 SCMR 1602. That is where the 2-member bench judgment was reported. And it actually, essentially, that's what we are saying. There cannot be a bar on reporting what is true. But even if it is very offensive. Yes, because then the truth is the best defense to whatever proceedings come against you. But the norms are that the language should be temperate. Yes. But you know what has been happening for the last 2-3 years? For me, as a very humble lawyer of this court, it's very, very disturbing. And particularly how to regulate this and demonizing of the judges. Law kaun sa hai jo aap regulate karenge? Let's remove judges. I'm talking generally. Even if it's a story nothing to do with judges, isn't a journalist required to be truthful? And what I've again seen, they will make one statement today. I'm not putting a finger on anyone. Completely exposed, completely wrong story. They don't even have the courtesy to do a retraction. This was a wrong story. And because, I mean, you know, I think at the end of the day, societies crumble if truth does not survive. I mean, that's what happened, because immediately after the court proceedings, the media was sort of exploded with the order, that the idea that the notices have been ordered to be withdrawn. And the Pakistan Bar Council took me by, I was scolded because we actually went out. No, now we have one up. We are doing live broadcast. We are grateful, but Mr. Kalpe Hassan is sitting right behind me and watching me, because he said we made a categorical statement in a press conference saying that criticism is welcome, but beyond that, the bars will not tolerate. No, but we are attending to another matter of the truth of a matter. I mean, it may be very harmful, it may be very hurtful, but it's true. At least that is no longer, I mean, everybody expressing opinions. I mean, what I'm worried about is that even today, nobody is saying, sir, we printed a wrong news, notices were never withdrawn, and it's a misreporting of the Supreme Court proceedings. But who is going to attend to that? Sir, बात ये है, it is for them to, थोड़ा अच्छा, एक दूसरी बात भी आपको बता दें. अब वो भी बात खत्म होती जा रही है. Do you know the reason why the Prophet was sent? Which says, the Holy Quran says it, because of his ikhlaq. yes. I mean, courtesies have gone completely. I mean, this is a central pillar of the faith. Yes. I mean, I was sent to perfect your akhlaq. I mean, there are hadiths on this. So that thing, I mean, it's not that we deprive people to speak, but at least one person's, this is also small courtesy. There are big courtesies and small courtesies. I mean, the kind of things, I don't know. I mean, the kind of arguments you can open BBC, they very strongly disagree with each other. Yes. They don't become abusive. Here, TV channels kind of enjoy, ratings are going up, making money. It's all connected with the truth. It's committed morals. I mean, you can disagree with each other. Absolutely disagree. I don't agree with your point of view. I mean, we judges, we disagree with each other. We don't start fighting with each other. It's not being criticized at all. Anyway, what is the solution in your mind? We can't reform society. That's not our job. We can raise certain questions. There are 3 distinct matters here.
One of them is देखिए जहाँ तक लॉस का है ना वो इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन इंक्लूडिंग द जर्नलिस्ट. द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये तो सब पे अप्लाई होते हैं. उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये सिटीजन पे होगा ये जर्नलिस्ट पे होगा, वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल है. इन दिस केस आपका क्या मौक़िफ़ है कि इसको जैसे हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई डायरेक्शन दें लॉ बनाने पे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पे, उस पर आप असिस्ट कीजिए ना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार के व्हाट कैन बी डन इन दिस केस. ऑलरेडी 2015 में वो है, उसको अगर उसी को देख लिया जाए या वो पैमरा का है ना, दैट हैज बीन मेड अंडर द लॉ. लॉ के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो प्रिस्क्राइब है, वो तो उनमें पब्लिश किया हुआ है एज एनेक्स है, वो लगा हुआ उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है पैमरा लॉज के अंदर. तो ये देखने वाली बात को आगे बढ़ाते हुए अब लीगल प्रैक्टिशनर्स क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें कैनन्स ऑफ प्रैक्टिस हैं पूरी लगी. अब जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, यू नो. अब हम आई डोंट वांट टू बिकम अ रेगुलेटर, so Heather Vaid Saab wants time, so maybe you can also assist and look into this aspect of we actually intend to file a concise statement. प्रिंट मीडिया के लिए भी है, प्रिंट मीडिया का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर भी लगा हुआ है वो CPNE वाले जो. To this honorable court's judgment that code of conduct was actually framed 2014 Supreme Court PLD. कभी ऐसा हुआ है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब यहाँ तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, अगर वकील कोड ऑफ कंडक्ट अबाइड ना करे उसकी लाइसेंस रिवोक हो सकती है, जज को फारिग किया जा सकता है. ये कोई ऐसी कदगन पैमरा में तो है सर, पैमरा में वो तो क्योंकि वो उनके हाथ में उनका बटन है ना, उसमें शो कॉज भी है, कैंसिलेशन वो उनके हाथ में बटन होता है ना, वो कर सकते हैं, प्रोस्क्राइब भी कर सकते हैं वो. अब ये बातें हमारे चले आप इन पे नोट कर लें. न्यूज़पेपर में भी है, डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाता है उसका भी. लॉर्डशिप इस मुल्क के अंदर PPO भी रहा है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए से क्या कुछ हुआ वो भी आपके इल्म के अंदर है. आपने शायद पढ़ी नहीं, किसने किताब लिखी थी पहली मीडिया लॉज ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है? मैं जवाद हसन साहब जी, जस्टिस जवाद ने लिखी थी एक, उनकी भी किताब है, पहली मैंने जिक्र किया, पहली मेरे मास मीडिया लॉज इन पाकिस्तान. जावेद जब्बार जी, आई डोंट नो, मैं गेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता. 97 में शायद सर किसी में भी लिखा हुआ ना. ये मैंने पूछा था, आप ही ने लिखी हुई है. जावेद जब्बार साहब ने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिटिकल, अच्छा, मगर सारे मीडिया लॉज जो कलेक्ट किए थे मैं समझा कोई दो दूसरे से, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया का इशू है, नहीं वो कंपैरिजन है. PFUJ इज हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, अगर इनको इजाजत दे दीजिए कि ये इंटरवीनर बन सकें. कौन? पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट. इनको ऑलरेडी नहीं नोटिस दिया हुआ है? नहीं, इनको नहीं गया हुआ नोटिस. अच्छा, अगर आप कोई चीज फाइल कर, आप क्या PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन, आप उसकी क्या है अपना इसमें ग्रामी? जी, अफजल भट्ट मेरा नाम है जी. और आप क्या हैं? मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट. पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, PFUJ कहते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है या सब है? सब है इसमें एवरीथिंग. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कब शामिल किया आपने? पहले तो प्रिंट का था ये खाली. यही हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा हिस्सा शामिल हो गया. जी, आप कुछ कहना चाहें, आप लिख के तहरीर देते हैं, अगर कोई अभी बात करना चाहते हैं इन जो मौजूदा केसेस उनके मुतालिक, हम सुन लेते हैं आपको. इसमें ऑनरेबल मैं कोर्ट से मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं. पहली बात तो यह है कि हम बहुत क्लियर हैं कि तनकीद में और ट्रोलिंग में बड़ा फर्क है. तनकीद को हम जायज समझते हैं और ट्रोलिंग को जुर्म समझते हैं. एक तो हमारी वाले से ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि FIA ने इस हवाले से ट्रोलिंग और तनकीद को मिक्स ही कर दिया है और इस केस को वो दूसरी तरफ ले गई. ऐसे लगता है कि जैसे ये एक जर्नलिस्टों पर अटैक के लिए ये किया गया था, कोई ट्रोलिंग रोकने के लिए नहीं किया गया था. मीडिया जुडिशरी को हमने सामने कर दिया को पूरी दुनिया में ये हमसे भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई अचानक ये क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में. तो एक तो FIA को ये
डायरेक्शन जारी होनी चाहिए कि ट्रोलिंग और तनकीद को अलग कर दे प्लीज। वो तो अंडरटेकिंग उन्होंने दे दी है। ठीक है, नहीं जो नोटिस जारी हो रहे हैं उसमें कम से कम अब मैं एक नोटिस मैंने देखी नहीं उसकी शक्ल, कोई मुझे उसकी शक्ल ही दिखा दे। सर अभी सर ये सीएमए दी है, अलाउ कर दे जरा आप प्लीज, आप देखिए ना थोड़ा, अब आपके सदर बात कर रहे हैं, आप इनके ताबे नहीं हैं। अच्छा सर जरा आप बात तो कर लेना पूरी। हाँ अच्छा जी, तो एक तो ये है कि इस हवाले से बिल्कुल हम आपको ये नोटिस जो भी जारी हुए हैं, काफी लोगों को नोटिस जारी हुए हैं, देखिए ना वो नोटिस की बात आए तो हमारे सामने ना, फिर उस पर हम ऑर्डर कर लेंगे ना। अभी आप कुछ और बात करें ना, वो बातें तो आपने सारी सुन ली ना, नोटिस वाली बातें 184(3) में हम जाएंगे ना, फिर आप सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे ना, तब समझे ना, उसके लिए कमेटी के पास जाएगा, सारा आपको बता दी है। आप फिर वही बात, हर आदमी वही बात कर रहा है, या आप अपने बाहर जाएंगे कहेंगे मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को बात कर दी थी, सारा मलबा हम पे डाल देंगे। नहीं ये ऐसे ना करें ना, या तो कहे हम कानूनी, हमारी तशरीह गलत है, हमारी कानूनी फहम गलत है। बार बार एक बात को दोहराने से क्या उसमें वजन बढ़ जाता है? अटॉर्नी जनरल से कम से कम ये अंडरटेकिंग ले लें कि इलेक्शन के बाद तक जो है, क्योंकि ड्यूटीज हैं जर्नलिस्ट की। साहब आप कुछ न आप बैठ जाए थोड़ी देर, इनको बात तो करने दें आप। अच्छा सर, इसमें जाहिर है कि बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, और मैं आपने मेरे ख्याल में प्रेस इन चेंज वगैरह जो हुआ है, गुजरी है सहाफत पे, आपने पाकिस्तान तारीख से वाकिफ नहीं है, वाकिफ है, कोड़े लगे, जेलों में गए हैं, बिल्कुल आप तो ऐसे बर्पा हो गए कि नोटिस से भाई जाके पता नहीं क्या कहेगा, आई डोंट नो। मतलब सर बेसिकली टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको दोबारा कह दूं, हमें भी नोटिस मिली हैं, हमने कोई स्टे ऑर्डर नहीं लिए थे, हम चले गए थे नोटिस के लिए। नहीं, हम उस पूरे पुलिस वाला मुझे कह दे कि जी आपके मोहल्ले में कत्ल हुआ, आ जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं सर, हम उसमें भी पिटिशनर थे जब आपको नोटिस हुए थे, और हमारे लिए ऑनर की बात थी। आप जब ले आएंगे हम देख लेंगे ना चीजों को, हम अभी से कोई बात नहीं करना चाहते, कल खबर लग जाएगी। सर ये फाइल पड़ी है आपके पास, हमारे दोस्तों ने दे दी है, अब ये जाएगी। अब अच्छा अब सुन लीजिए ना, ये जाएगी, इस पे नंबर पड़ेगा, फिर पेश होगी कमेटी के पास, अगली बात करें। सर ये सीएमए है सर, अभी आप सीएमए कोर्ट अलाउ कर सकती है, सीएमए है, उसको रिट में कन्वर्ट कर दूं, मैंने आपसे इतनी दफा बोला है। सर उसको सर असल इशू, सारा इशू सर काला नोटिस का है, वो सीएमए जाएगी नहीं कमेटी के सामने, फिर वो कहेगी सारी बात है सर, सीएमए तो नहीं जाएगी। सबसे सीनियर साफी कौन है इधर? जी मैं तो इस वक्त प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं, सबसे सीनियर मुझसे साफी सीनियर कौन है इधर अदालत में? जिनके बाद सफेद नहीं, ये भी बहुत सीनियर है। ये भाई आपको पता नहीं है कि प्रेस के साथ हुआ क्या पाकिस्तान में, शायद आप भूल गए हैं। मैं काफी मैंने क्योंकि कंसिडर किया था, वो जमीर नकवी साहब उन्होंने किताब लिखी थी प्रेस इन चेंज, जमीर नियाजी साहब ने लिखी थी प्रेस इन चेंज। हाँ तो जरा पढ़ लीजिएगा उसको जरा, कोड़े लगे हैं, मतलब क्या क्या नहीं हुआ है, आप क्या क्या जुल्म नहीं हुआ सर। ये पीएफजे की बड़ी तारीख साल हिस्ट्री है, केसेस भी है ना, और प्रेस फ्रीडम के हवाले से कल भी हम काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ जी, जर्नलिस्ट झूठ लिख सकता है या नहीं? झूठ क्राइम है सर, कैसे लिख सकता है? नहीं क्राइम तो नहीं होता है झूठ लिखना, ये आपकी बात गलत है। अच्छा नहीं तो अगर वो लिखे तो क्या हो? कुछ नहीं होना चाहिए कार्रवाई। हम बताइए ना, हम बताइए ना, आप देखिए अब हम अपने आप को अबव द लॉ नहीं समझते। लॉ की बात नहीं है ना, लॉ तो वायलेट नहीं हो रहा है, वो रिट्रैक्शन होता है ना उसका, झूठ लिखना कोई लॉ में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है, तरदीद या माजरत। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों? इसमें को ममानियत है, इसलिए कि अखलाकियात भी है, एग्जैक्टली ये बातें अखलाकियात की आती हैं जी, ये सेल्फ रेगुलेशन की आती हैं। अगर आपको जर्नलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये आपको ही सोचना होगा कि कैसे बेहतर करें। कल कोई अखबार में खबर लगा देता है कि पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ है, गलत है ना? गलत है। इस पे तो कोई ये नहीं कि कोई कानून तोड़ा है, कुछ है, झूठ भी है, ठीक, मगर रहेगी बात, क्या आप करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप बताएं कुछ करें कि हाँ ये गलत है, मैंने अपने सहाफियों के खिलाफ एक्शन लिया, ये भी पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं पता, आपने मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर दी है,
ये हमारे यहाँ प्रेस क्लब में भी और PFJ में पूरा प्रोसीजर मौजूद है। अगर कोई जर्नलिस्ट इस तरह की खबर देता है, क्या करते हैं आप? उस पर कमेटी बनाई जाती है और फिर उसको अकॉर्डिंग टू उसके एक्ट के मुताबिक जो है वो ये ना क्या करते हैं जी बताइए ना। फिर जुर्माना करते हैं, बाद मेंबरशिप सस्पेंड कर लो, मेरी मेंबरशिप सस्पेंड, खुदा हाफिज, मुझे नहीं चाहिए मेंबरशिप। फिर क्या करते हैं आप? देखिए मेरा नहीं ख्याल के आप बताए ना, देखें आप पे बात आई तो आपने कहा मेरा ख्याल नहीं, हम कभी ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की। जो जर्नलिस्ट कहे कि भाई मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए, मैंने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप मेंबरशिप कैंसिल करते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसको नुकसान क्या पहुंचता है? जैसे भी चलो अच्छा, मैं कल एक यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं हूँ मेंबर आपका। फर्क सर पड़ता है, बातें सोच जब कोई भी बॉडी, ये देखिए ये फोरम तकरीर करने का नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दीजिए, ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि फिर 8 तारीख तक कम से कम, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, कम से कम सब लोगों को उस हद तक FIA को आप इंस्ट्रक्शन दें। अब मैं कोई बात समझे नहीं ना, ये बार बार दोहराने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लिख के भी दे देते हैं, आप जो रिक्वेस्ट आप वो लिख के तो दे दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दो 184 में। इसमें लिख, अभी टाइम और बात रहेगी, है इसमें। ओके सर, हम सर लिख के देते हैं। रिक्वेस्ट आपके केस हमने करवा लिया जी, थैंक यू वेरी मच। क्रिमिनल 48/2020 और ये दूसरा कौन सा केस है? ये वो कंटेम्प्ट वाला है इसके साथ। आज भट्ट साहब, अगर आज आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, बड़े अफसोस की बात है, आप खड़े हैं, दुनिया देख रही है, तो इसकी रीजंस हैं। आप लोगों को जो अखलाकी ड्यूटीज थी वो उससे बहुत लोग पीछे हट गए। पाकिस्तान में बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। ढूंढ ढूंढ के बुराई को, अगर हर मुल्क में बुराइयां हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है बुराइयों को ही हाईलाइट किया जाता है। कितनी अचीवमेंट हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है, कितने जवान हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं पता। हमारी कैंसर की बीमारी का जो मेडिसिन तैयार की लियारी के एक लड़के ने की है, किसी को नहीं पता। हमें बाहर मुल्कों की प्रेस से पता चलता है कि तो कुछ बेटर इमेज भी बताए ना पाकिस्तान का। बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत आगे हैं इस लिहाज से, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा सब कुछ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट और मीडिया के हवाले से जो भी शिकायत यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, उसको FIA एक लाइसेंस समझे कि फर्दर प्रोसीड प्रोसिक्यूट करने के लिए। हम उनके माइंड रीडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक आपका केस बता दूं, आपका सिर्फ एक केस ने बताया, उन्होंने कहा क्रिमिनल ओरिजिनल P48/2020। इसके साथ कोई और केस नहीं है? अगर कोई है तो उसका नंबर दे दीजिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई और केस नहीं आ रहा है, वो भी हम लगवा देंगे। आप बाद में दे दीजिएगा नंबर, इसमें लिखें। ये पूछेंगे अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल साहब, इट इज सो मच माई सेल्फ। हाँ, मतलब ये अभी जो JIT कौन हेड कर रहे हैं अभी? My lord, it's the additional DG FIA crime going FIA. तो ये जो आपने अंडरटेकिंग दी है, अगर ये आप इसको इलेक्शन के बाद सेशन रखना शुरू करते तो कोई हर्ज तो नहीं होगा? ये 4-5 दिन की तो बात है, इसमें बीच में छुट्टियां आ जाएंगी, 2-3 दिन वैसी। 5 फरवरी छुट्टी है, फिर इलेक्शन की छुट्टी है, उसके बाद फिर ये 2-3 दिन रह गए ना। जब तक ये अपनी एक पिटीशन भी फाइल कर देंगे, वो चीजें सामने आ जाएंगी ना, सही तरीके से हार्मोनाइज हो जाएंगी कि आप सही हैं, ये सही है, JIT ठीक है, क्या ट्रोलिंग हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, वो तो खुद भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे ये लोग जितने खड़े। अगर ऐसा है तो आपकी अंडरटेकिंग इलेक्शन के बाद चले जाएं, कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट हमें देखना है, JIT क्या होती है, कानून में इसका है जिक्र नहीं है, ये सारी बातें आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि अभी तो हमें जब केस आएगा आई कैन ओनली थिंक अलाउड कि ये सारी बातें सवाल उठेंगे। 8 को इलेक्शन है, उसके नेक्स्ट वीक में रख लें। 8 के बाद जो है 8 में रात है, जुम्मा आता है, तो आप मंगल कोई नेक्स्ट के बाद ही होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग इलेक्शन के दौरान ये जो होगा इसका मतलब कुछ और होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग करें।
My lord. You can discuss this with any FIA director or any My lord, person who is if I may, present in this. the notices are under section 160 of the CRPC. जी, These 160 are का notice inquiry है. notices. And the Which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage Inquiry notices. stage के ऊपर आती है. Inquiry stage 160 का notices. notice. And as It is just like a call-up notice. call notice. And It's not a criminal case. not yet, sir, not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this वो court करें yesterday. हम, we are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say कि ये जो 5-6 दिन बीच में है, इसमें 2-3 दिन वैसी छुट्टियां आ रही हैं, हफ्ते को आपकी भी छुट्टी है, फिर इतवार है, फिर पीर है, 1-2 दिन ही तो 3-4 दिन है वर्किंग इसमें, तो अगर इसको अगर आप 8 के बाद वाले वीक में ले जाते हैं तो कोई चीज रुक नहीं रही. वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee, and the committee will decide. And we will also see the constitution of JIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. इसको देख लें, अगर इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको रोकने में कोई बहुत बड़ा हर्ज है, मतलब things will not be. At this stage, if I may say, at this stage, it is only the statements that have to be recorded, nothing beyond that. What And statement? So, if there are any, and 160, my lord, if there are any screenshots of any tweets which were on the Twitter which were tweeted or any. So you are saying no coercive action will be taken? Yes. अच्छा. No लेकिन सर coercive. जिन ये तो जर्नलिस्ट आपका मसला हल हो गया. नहीं सर, लेकिन जिन जर्नलिस्टों ने इलेक्शंस में ड्यूटियां करनी है, अपनी दूसरी ड्यूटी का वो FIA की पेशियां भुगतेंगे सर, बजाय इसके कि सर, ये- इलेक्शंस के बाद हो जाएगा वही मसला. सर ये इलेक्शन आपको हम अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे सकते. In proceedings with order नहीं हो सकता. लेकिन सर जिस तरह वो इंसिस्ट कर रहे हैं उससे नहीं हो सकता. आप थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल, व्हाई डोंट यू थोड़ा सा इसके अंदर आप when how many days क्या left है for elections? आज क्या तारीख है? कितने My दिन lord, रह today गए? is 30th, so we are just left with 8 अब days. hardly any तो days रह गए. 4-5 दिन रह गए, इसको कर दे आप कह के इलेक्शन के इतना बाद. जरा प्रोफेशन का Thank you. इशू है कि भाई ठीक है. they are running here, there are so many stories developing. By the way, unable to perform. Show some grace for the journalists ठीक है, sir, also. of course, they have to you do should that. thank him, not us. They have to do that professionally. We are saying he's there thanking us. We चलो don't भाई, thank us. agree. Thank you. ठीक है, अब ये सर आपका थैंक यू यहाँ पर अदा करेंगे, उनका चाय के कप पे करेंगे. नहीं, हमें शुक्रिया नहीं करें. ये इनको शुक्रिया करना है तो करें, अगर आप करना चाहें. सर नहीं, ये सर इसमें लिख लें, इसमें लिखिए. कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है सर, ठीक है. आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं ना? जी. अच्छा. They'll have to. पिछला ऑर्डर कहाँ गया? वैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑन जनरल पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी हेल्ड ऑन एवरी. This is a serious discussion where freedom of expression, truth, you heard speech. You know, every country deals with it differently. I mean, sort of in Thailand, there's one very severe kind of law, which is their country. That's right. In America, is the First Amendment. Here, we have 7 restrictions in the freedom of expression. In Europe, you can't even say something. Exactly. You know, it's called something denier. So it's a variable thing. And I always stress most towards the truth. I don't know why, but that's my personal thing. It doesn't, the law doesn't really say that. इसमें लिखिए कि कल का ऑर्डर का है. हाँ, अच्छा शुक्रिया. Abdul Qayyum Siddiqui points out that the 4 journalists who, in the order passed yesterday, he had forgot to mention, in yesterday's proceedings, notice. he had forgot to mention the attack on Mr. Absar Alam, who was a journalist, and as such, paragraph 2 of yesterday's order may be read to include his name as well. Full stop. Order accordingly.
So it extends the report that you have to submit. It will also apply to Mr. Absar Alam. इसमें लिखिए Mr. Afzal Butt states that he is the president of the Pakistan Federal Union of Journalists and wants to become a party to these proceedings. Full stop. He may move a appropriate application and may also submit suggestions as to how to proceed further with these cases. Full stop. आपका नाम लिख दें प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे आपका नाम प्रेसिडेंट का कैसे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट states that they will be filing petition with regard to press freedoms and the difficulties being faced. Full stop. Office to immediately number the same and to register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution, number it and place it before consideration of the committee (C) constituted under the Supreme Court Practice and Procedure (Act, 2023). अब हम कह तो नहीं सकते मगर इसी के साथ ही वो कनेक्टेड हो जाएगा। करना चाहते हैं आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं पार्टी बनना चाहते हैं हमारी पिटीशंस में पार्टी बन जाए पिटीशन फाइल करें नहीं अगर आप इनकी पिटीशन में पार्टी बन रहे हैं तो फिर तो वो खुद ही फिर तो अलग एप्लीकेशन होगी अगर आप अलग उनके साथ आना चाहें तो आप भी बन जाए उनसे पार्टी 1 2 3 4 मतलब अलग भी आप फाइल करो ना सेपरेट पिटीशंस हो जाएंगी वो जरा जैसे भी आप लोग कर रहे हैं फिर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो पता नहीं किस केस में एप्लीकेशन दे रहे हैं पुराने में एप्लीकेशन दे रहे हैं आप नया तो कोई है नहीं अभी इसी केस में पहले हम आपके लिए वो उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे आपके दोनों दरवाजे खुले इस तरफ आना चाहें उस तरफ आना चाहें जैसे भी सोच समझ के आप कर लीजिए और आप अपनी फाइल करेंगे 184 में अच्छा फुल स्टॉप आपने क्या कहा था हाँ वो लिखिए number of concerns were addressed and learned Attorney General reiterated the undertaking given in the court and further on the request of the journalist stated that FIA that the matter meeting of GIT that matter regarding journalists will not be taken up or proceeded will be taken up or proceeded by FIA before the elections ठीक है and thereafter all right ठीक है जी ठीक है it's your undertaking not our order it's your undertaking और अगर नई डेट होगी तो उसकी नई नोटिस इश्यू होगी जाहिर है पुरानी डेटें तो गुजर चुकी हैं उन नोटिस there would be a follow up इसमें लिखिए अब अगला लिखें follow up notice Mr. Haider Waheed he learned Mr. Haider Waheed follow up notice if follow-up notices are to be issued, they will be issued after the elections. ठीक है ना follow-up तो करना पड़ेगा डेट Mr. Haider Waheed, Council in CP number 27 of 2022 stated made submissions. Number of questions were raised and he stated that he will be attending to them if some time is granted by filing a concise statement and requested that the matter be adjourned to a date after 2 weeks. How much time did you want, Mr. Haider Waheed? That's fine. Okay. Even less than that. Okay. Full stop. आप लोगों को भी बाद में चाहिए. All present. Also stated that this case may be adjourned to a date after the elections. Yes.
and which would also grant them time to file the referred to petition, whoever wants to do so. कुछ और रह गया बात? And on a lighter note, my friends from journalist community might bear in mind the observations by Her Ladyship Justice Hilali in the meantime. Sir, Attorney General is saying this about Judge of the Supreme Court. This means it is going to have a chilling effect, and Justice Sarat Hilali's statement is going to be used against us. Please. ये देखिए, ये आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की आपने 4, 5, 6 वायलेशंस कर दी हैं आज, और अपना इट शुड नॉट इंटरफियर इन केसेस वेयर यू आर नॉट. अब आप, हम जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पास ऑलरेडी था और ये मैंने पढ़ा था. मैं इसका आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था. आप इनके हाथ ना लग जाए आपके दोस्तों के. ठीक है, तो then we will give a date. जरा let us see, because a number of important cases are coming up. I don't know when we will give a date. अगर खुदा ना खासा कोई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, अगर कोई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, किसी को इतराज है? I have no objection. No objection, sir. Okay, as suggested. ठीक है सर, फरवरी का लास्ट वीक उसकी वजह ये है कि शायद आपस में बात कर लेना, हमें कोई इतराज नहीं. आप कल लगाएं, हम कल लगा देते हैं. फरवरी के लास्ट वीक में प्लीज गिव अ डेट. जरा कंसेंसस से भी कर लेना आपस में.